Good evening, Strategic Alpha community members. This is Weekly Community Connect. It is 12th September 2025. We are meeting now at 9 p.m. Hello everyone, I am Suyog Dhawan, founder of Strategic Alpha and the Conviction Club. So we meet every week Friday at 9 p.m. and this week's special talk is that we are going to learn when to book profit in gold. So, what is that indicator? What is that pattern? What is that setup which will tell you about the profit booking in gold, especially about long-term profit booking. So, we will be discussing about that. That is the this week's special talk. So let us move forward with the weekly roundup first. So this is 12 September 2025. Let us discuss about frontline indices first. India VIX closed at 10.12. It was down 6.1%. There was some stability in the market in past 1 week. Nifty 50 was up 1.5%. Nifty Midcap 100 was up 2.02%. Nifty Smallcap 250 index was up 1.5%. Nifty Public Sector Enterprises was up 2.5%. BSE IPO index was down 0.88%. Now let us look at so past 1 week what has happened is Nifty has uh, become somewhat stable, and now let us look at sectorial indices. So the top performer this week was Nifty Defense. Nifty Defense index was up 7%. Nifty Telecom index was up 5.2%. Nifty IT index was up 4.3%. PSU Bank index was up 2.9%. In fact, in the satellite channel we had discussed about PSU banks, and PSU banks have started showing up. It was one of the sectors where the sector was close to 52-week high and above 30-week moving average also. So PSU bank index is likely to be a next sector rotation because autos has shown the sector rotation, then metals have shown the sector rotation. Next week onwards, maybe we might see a sector rotation happening in PSU bank. So you must have that PSU bank in your radar. Nifty public sector enterprises was up 2.5%. Now let us look at commodities performance. So commodities performance, precious metals, silver was up 3%. In fact, silver touched 1,29,000 in MCX. Copper was up 3.17%. In fact, we are going to discuss about we are coming up with a special video on copper commodity bull run. Copper is the new oil, and we are going to also discuss about copper miners. So that video is coming soon on our YouTube channel. So do stay tuned for that. So copper was up 3.17%. Silicon was up 2.83%. Platinum was up 2%. Gold was up 1.57% after the gold has broken out after about 3,500 US dollars in US. Gold has been in the bull run. So Brent was up 3%, crude oil was up 2.3%, and other commodities, as you see. From industrial commodities, palladium was up 11.57%, aluminum was up 3.3%, and other commodities, as you see. Now let us look at the news which matters the most. UPI CPI inflation rises to 2.9% in August. Now, second is first time India's crude steel production has reached over 100 million ton in just 8 months in FY 2025. This is one more development. Third development is is in talks with US for bilateral trade agreement, says Piyush Goyal. Fourth development is India explores rare earth deal with Myanmar rebels after Chinese curbs. So not much of the means macro developments happened from the news front this week. Now let us look at Strategic Alpha's FTVT framework. The sectors which are in uptrend, high relative strength and low valuations. So which are not mentioned here, but I like to talk is copper miners. So copper miners is qualifying from Strategic Alpha's FTVT framework because FTVT is all about fundamentals plus technicals plus value plus trigger, because fundamentals tells you what to buy, what not to buy. Technicals will tell you when to buy, when to reduce, when to increase, when to exit. Value will tell you how much to buy, and triggers will help you prioritize between the bets. So from Strategic Alpha's FTVT framework, copper miners is getting qualified now, and the detailed video on copper miners is going to come soon on our YouTube channel. So stay tuned on that.
It is sector in uptrend, high relative strength versus the markets, and low valuations. It is one of the cheapest sector available in the world. The same thing I talked about gold miners, and in 1 year we have seen that gold miners is up more than 130%. 6 months back, we also talked about silver miners, that is up 76%. That also qualified from Strategic Alpha's FTVT framework, which I had already discussed about it. Now, now the satellite stocks which I am studying and owning, I'll not talk about it much because the today's special talk is about how to decide when to book profits in gold and what is that pattern. So let us go forward with that. So see, if you are a long-term investor, so many of the times, many of the investors have been invested in gold. Maybe we did a special video on gold in March 2024. Since then, gold is up 60%, 65%. Now many people are thinking that by gold बहुत महंगा हो गया. But please understand that gold is in a bull run at least till 2028, and we have discussed that entire case study in commodity bull run session. If you have not gone through it, just go through it. It is available on our YouTube channel. Now, in all this scheme of things, how to decide that when to book profits in gold, especially I'm talking about long term, I'm not talking about short term. How to when to book profits in gold, because as the gold has seen very rapid price, people are getting feared. But I don't think there is any need of a fear at this point of time. We'll discuss about that. So this is nifty, this is gold price quarterly chart, which means 3 month ka ek candle, one candle is equal to 3 months. So this is gold price quarterly chart and subsequent RSI levels. These are all the subsequent RSI levels, and that RSI levels is also plotted by 10 exponential moving average, 10 period exponential moving average, which means 10 uh, period means one quarter is 3 months, and 10 period means 30 months. So this is 30 months moving average of RSI. And we have seen a pattern whenever the gold crosses, means RSI crosses from this 30-week moving average, 30 period RSI, and it moves towards upwards, the gold bull run starts. And whenever it falls down from RSI falls down below this, just crosses this 10 period moving average of RSI, that is when bull run ends. And this has been the pattern happening. If you see the past, here also it gave a signal earlier at this point of time, exactly near top. And after that, gold fell down. Then once again, the gold bull run started here before 1978. And whenever that signal came, gold entered into a large bull run, wherein the gold price itself went up 3x in quick succession of time. Now, once again, the similar thing happened in 2001, 2002, when this uh, price crossed this RSI crossed this moving average line. That is the time gold bull run started. And even if you see here, it touched that, but it didn't close below that. So here it bull run started, and gold become a mega multi-bagger. Gold become a mega multi-bagger from 1997 until 2011. So 1997 to 2011 is close to 13 years of gold bull run we saw. Now it also gave a intermittent exit here, profit booking signal. But once again, after some time, maybe it gave a exit at around 1000 USD, and it gave a entry once again around 1100 USD or 1200 USD, 20% difference. And gold bull run once again started, and it ended from 1000 USD, it touched nearly 2000 USD. It gave a exit at around 1500. So you got a 50% up move in gold during that time within 1.5 years. And it's a very good period. If you are getting 50% return in 1.5 years, gold is a big thing. Now whenever that RSI crossed below that level, gold entered into a bearish phase. So gold fell down from 2000 USD to 1000 USD after that. Whenever that and red profit booking zone are the red circles,
where RSI is below 10 moving average. So whenever that crossover happened, the bear run started. So bear run lasted for very long time. Once again, the bull run started when if you are seeing this green zone, that is when the bull run started again. So bull run started at 1000 and it kept on going up, and it ended it here. So you got a 50-60% move again. Once again, the recent bull run which has got started, it has got started in October 2023, and we came up with a detailed video on gold bull run, on commodity bull run in March 2024. So gold bull run has started, and if you are seeing here that the gold has more than doubled since the gold bull run has started in October 2023. Now the if you can see around 91 to 95 RSI on quarterly charts is when gold tops out. Currently quarterly RSI is at 86. So unless and until quarterly RSI touches 90 plus, I will not be worried about profit booking in gold, because historically if you see, whenever in a gold bull run it touches 90 at least minimum RSI touches 90. So we are now at 86 around. So for it to cross from 86 to 90, it is a long time, and even if it touches 90, immediately gold bull run doesn't end, because if you have seen, it touched 90, it remained there for long time. Here at least it remained there for long time. Gold on RSI, even if it is expensive, it can remain in a bull run for quite a long time. So as of now, there is no much worry. So we will turn cautious. We should turn cautious only when the quarterly RSI is above 90, and be prepared for profit booking whenever RSI goes below 10 MA. Now what will happen is, whenever RSI, so at this point of time, maybe we might see gold moving towards 4200 USD, which is 10-15% above from here, and after that we might get a sense once it touches above 90-91, that is the time I will be cautious. At this point of time, there is no need of becoming cautious in gold. This is what data and charts are saying. Please do not take this as a recommendation. Whatever I am sharing in this today's presentation is purely from an educational perspective. So at this point of time, there is no worry, and you should not be worried about this. If it touches 90, you have to be cautious and not worried. So being prepared is much more important, and if you know this, uh, you don't have to worry. And if you think that this chart is making sense to you, please comment as MS in the comment box. Please comment as MS in the comment box, so that I get to know that now you have got this understanding when to worry, when not to, when to book profits in gold. Yeah. So thank you everyone. So let us move forward. Hope everyone is clear about when to think about profit booking in gold. So as of now, profit booking time in gold from a long term, if you are a long term investor, it is away. It is away. So it is not applicable for gold miners. It is just the indicator for gold. And today's topic was about gold, and I discussed about that. So it is not applicable for miners. For miners, I'll find out what is right, and at some point of time, I'll share that also. Now let us move forward. So this is gold divided by equity. Sorry, this is equity equity in dollar terms. This is equity in dollar terms divided by gold in dollar terms. So this was the time when you should have bought a lot of gold, the red zone, reducing the equities. That is the time you should have increased your gold bets, and this green zone is the time when you need to slowly move out of gold and start allocating to equities, because even if it falls there immediately, market doesn't rebound. If you have seen here, if it touched that green zone, it remained there for 1 2 3 3 months. So 3 months you got an opportunity to accumulate and buy. Even here, prior to that, it gave you opportunity for how much months? 1 2 3 4 5 6 7 7 months. Here it gave opportunity for 2 months. Here it gave opportunity for almost a year. Here it gave opportunity for 2 months. Here it gave opportunity for 3 months. So it is quite sure
that whenever that line touches, you will get ample amount of time to slowly move out from gold, precious metals, and slowly move towards equities. But as of now, that time is yet away. This might look like that it is very close, but this might take maybe 3 or 4 5 months, 3 to 6 months. So be ready for summer in equities, which might come in 3 to 6 months. What I'm saying summer, because equity, I have been saying equity as an asset class itself has been unfavorable. I was talking about from this data. Now, equities might come in favor once again, maybe in 3 to 6 months. That is the time it will start coming in favor. Uske baad, it might take 2 3 months. So the opportunity will be 2 3 months. So let us say today from here we will say, let us say 5 months. So September, October, November, December, January, February. So 5 months is February. So the opportunity to load up the equities, especially if the valuations are fair, that is also important. So the opportunity might come after till Feb, April, May, June. Feb, March, April, May. So from Feb to May next year, or maybe June, it might be a great time to load up the equities. So, and especially if the valuations are also for at that point of time, once again we will reassess. But this is giving a ballpark understanding that what lies in future. So let us move forward. Now what is happening is, so even though the equity as an asset class itself is unfavorable, one thing what is happening at this point of time is what we have seen is this is Nifty 50 equal weight divided by Nifty 50 chart. So what this means is the broader market sentiments have started improving. So this tells us about stock specific. So don't focus on index. So even if you are trading at this point of time, index will confuse you. Index, don't look at index because index might consolidate, but stock specific moves uh, can be very big. Are you seeing such kind of moves in past 3 4 weeks? इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा है बट स्टॉक्स में बड़े बड़े मूव आ रहे हैं. प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Are you seeing that? Just give me a thumbs up so that I can understand. Just give me a thumbs up. I think there is no option to give thumbs up. Yeah. Yes. So same thing is happening. So broader market sentiments have started improving, and if you are a stock picker and a trader, this is a great time to make profits because लोग इंडेक्स को लेके कंफ्यूज रहेंगे. दिस इज नॉट अ मार्केट वेयर एवरीवन विल मेक मनी. दिस इज अ मार्केट वेयर स्टॉक पिकर्स विल मेक मनी. और स्टॉक पिकर्स, अगर आपको स्टॉक पिकिंग आता है कि भाई बॉटम पकड़ ले और टर्न अराउंड पकड़ ले, रिवर्सल पकड़ ले या स्विंग पकड़ ले, ऐसे लोगों के लिए ये हेवन मार्केट है. ये इस टाइम पे आपको ट्रेडिंग में एक्टिव होना है बिकॉज मार्केट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा. बट आप अगर स्टॉक अच्छा पिक कर सकते हो, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी अ ट्रेडर. दिस इज व्हाट डेटा इज टेलिंग. सो वर्क हार्ड, मेकिंग अल्फा even in this market is possible. So it is completely a stock pickers market. This is what the data is saying. And what is the relevance of Nifty equal weight versus Nifty? Why I've taken Nifty equal weight divided by Nifty ratio chart? It is because निफ्टी 50 इज क्यूड. निफ्टी 50 में क्या है, एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बड़े दिग्गजों के पास बहुत बड़ा बड़ा एलोकेशन है. उसकी वजह से अगर 3 4 स्टॉक में मूव आता है तो वो लोगों को लगता है कि बुलिश है, बट मार्केट तो बुलिश नहीं होगा. अगर हमें मार्केट का रियल सेंटीमेंट समझना है तो निफ्टी इक्वल वेट देखना चाहिए. और ये तो रेशियो चार्ट है. निफ्टी इक्वल वेट डिवाइडेड बाय निफ्टी मतलब क्या है, अगर निफ्टी इक्वल वेट डिवाइडेड बाय निफ्टी का रेशियो चार्ट अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू इंडेक्स. विच मीन्स, और ये सिर्फ 3 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है. ये एक वीक का एक कैंडल है. 1 2 3 4 5 6 हफ्ते से मार्केट स्टॉक पिकर्स मार्केट हुआ है. और ये 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन है. इसका मतलब है ये अगर निचली तरफ अगर गिर जाता, इसका मतलब है ब्रॉडर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक भी पैसा नहीं बन रहा है आपका.
बट अभी के मार्केट में ये क्लियरली बोल रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक पैसा बन रहा है। आप मार्केट से दूर, मार्केट को देख के, निफ्टी को देख के दूर रहेंगे तो पैसा स्टॉक में बड़ा बड़ा मूव ऑलरेडी आके चला जाएगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज वी आर इनटू स्टॉक पिकर्स मार्केट. Now, at this point of time, let us also look at Nifty 50. So, Nifty 50 has come out uh, of a channel और वो यहाँ क्लोज हुआ है. इट ऑलरेडी बाउंस. दिस इज 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन. ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एज लॉन्ग एज निफ्टी इज अबाउट 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन, आप सिर्फ नीचे गया इसलिए वीक स्टॉक कट कर दो, बट मार्केट बेरिश नहीं है. मार्केट कंसोलिडेशन में है बट मार्केट बेरिश नहीं है. और दो बार उसने एग्जैक्टली वही टच करके वंस अगेन इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप. एंड नाउ टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज इट हैज ऑलरेडी क्लोज्ड अबव दिस चैनल, व्हिच मींस Nifty 50 also is expected to be bullish for the next 2 to 3 weeks at least. 2 से 3 हफ्ते मार्केट अच्छा रहेगा. This is what the data is saying. This is what the overall setup is saying. Now let us look at one more data point which is कि भाई आगे जाके इक्विटी फेवरेबल हो सकता है. बट आई सेड इक्विटी फेवरेबल हो सकता है. उसमें यह नहीं कहा कि स्मॉल कैप फेवरेबल होगा कि नहीं. उसमें यह कहा मैंने कि इक्विटी फेवरेबल हो सकता है. मे बी लार्ज कैप फेवर में आ जाए, स्मॉल कैप फेवर में ना आए. तो ये किस बेसिस पे बोल रहा हूं? When to build, see if you have not gone through my video in March 2023, तब मैंने ये कहा था कि this is the time to build 100% small cap portfolios. Have you seen that video? Comment as HS. HS मतलब have seen. Have seen. HS. If you have gone through my video session when I said in March 2023, said that completely 100% एक स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है. एंड उसके बाद 1.5 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा डबल हुआ. 1.5 साल में. तो वैसा टाइम कब आएगा? तो वैसा टाइम इज येट अवे. दिस इज द एनालिसिस ऑफ वी नीड. तो ये क्या है? दिस इज इंडियन स्मॉल कैप इन डॉलर टर्म्स. इंडियन स्मॉल कैप इन डॉलर टर्म्स मैंने कन्वर्ट किया है, और वर्सेस प्रीशियस मेटल्स इन डॉलर टर्म्स. एंड उसके साथ मैंने क्या किया है, नीचे रिस्पेक्टिव प्राइस टू बुक ऑफ स्मॉल कैप ड्यूरिंग रेशियो लोज. तो ये रेशियो जब भी ये जोन टच करता है, ग्रीन लाइन वाला डबल लाइन मैंने जो किया है, तब के टाइम में हेविली स्मॉल कैप आपको लेना चाहिए. बट कब लेने चाहिए हेविली स्मॉल कैप? उसके साथ वैल्यूएशन भी सस्ते होने चाहिए. तो जब ये लास्ट टाइम इस जोन में आया था 2014 में, मोदी रैली के पहले, तब के टाइम में प्राइस टू बुक था स्मॉल कैप का 0.9 टाइम्स, विच इज एक्सट्रीमली चीप. तो आपको रेशियो भी सस्ता मिले और वैल्यूएशन भी सस्ता मिले, तब लोडअप कर दो इक्विटी स्मॉल कैप. और आप स्टॉक पिकर नहीं हो, आपके पास रिसर्च भी नहीं है ना, आप रैंडम कुछ भी स्टॉक 50 उठा लेंगे स्मॉल कैप में से, फिर भी आपका पैसा डबल होना है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जब वैल्यूएशन सस्ते है प्लस जोन भी सस्ता है. उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से वापस जब आया 2020 कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम में प्राइस टू बुक था स्मॉल कैप का 1.5 टाइम्स, और रेशियो भी अपना कंफर्टेबल हुआ था. तब के टाइम में कितने लोगों ने विद इन अ ईयर स्मॉल कैप में पैसा डबल किया था? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड देर वर लॉट ऑफ पीपल अननोइंगली दे मेड मनी लाइक एनीथिंग. इवन एनी रैंडम पोर्टफोलियो इफ यू हैव बिल्ट in 2020, you would have made multi bagger returns. तो हमें क्या चाहिए? देखो, मार्केट से आर्ग्यू नहीं करना है, मार्केट को समझ के, मार्केट का अगर जैसे थिंक लाइक अ फार्मर. फार्मर क्या करता है? कौन से सीजन में क्या सो करना है वो पहले देख लेता है, उसके हिसाब से प्लान करता है और वही फसल उगाता है. और स्मॉल कैप की फसल कब उगाने हैं? जब स्मॉल कैप का टाइम फेवरेबल है. स्मॉल कैप का टाइम अगर फेवरेबल हो तभी आपको स्मॉल कैप की फसल उगानी है. और स्मॉल कैप की फसल कब उगानी है? जब वैल्यूएशन इज बिटवीन 0.9 to 1.5 एंड इवन 2.5 इज ओके प्राइस टू बुक, और रेशियो भी अगर सस्ता है, तब आप स्मॉल कैप की फसल उगाए. अभी के टाइम में क्या हो रहा है? इवन दो द रेशियो इज कूलिंग ऑफ एंड इट इज नियरली टचिंग दिस रेशियो लाइन, बट आज का वैल्यूएशन है 3.8 टाइम्स. अब 2022 में जब मैंने बात किया था स्मॉल, दिस इज द
टाइम टू बिल्ड स्मॉल कैप 100% स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, तब भी वैल्यूएशन कितना था, 2.3 टाइम्स प्राइस टू बुक, विच इज वेरी कंफर्टेबल. तो इवन दो द रेशियो डिडंट केम टू दीज लेवल्स, मैंने कॉम्बिनेशन देख रहा हूं. मैं एक चीज तो नहीं दे सकते हो, मार्केट इज लाइक अ एलिफेंट. अगला आप ट्रंक पकड़ोगे तो लोगों को लगेगा भाई ये तो कोई बड़ी मतलब ट्रंक है. कोई पैर पकड़ेगा, लोग समझेंगे कि भाई ये है, ये तो कोई पिलर है. पूंछ पकड़ेगा तो कोई समझेगा कोई अलग है. अगर आग बांध दिया जाए और उसको अगर ऐसे हाथी को टच करने दिया जाए, तो मेनी पीपल विल फाइंड अ डिफरेंट कंक्लूजन अबाउट व्हाट एलिफेंट इज. सो इन अ सिमिलर मैनर मार्केट का भी वैसे ही है. तो मार्केट का क्या है, होलिस्टिक एंगल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड रेशियो के साथ वैल्यूएशन अगर मैं मैच कर दूं, तो इट गिव्स मी अ होलिस्टिक एनालिसिस. तो इसके बेसिस पे आई हैव क्रिएटेड अ मॉडल. 10 ईयर का प्राइस टू बुक वैल्यू जो स्मॉल कैप के लिए है 2.2 टाइम्स है. 10 ईयर का मीडियन प्राइस टू बुक, मीडियन मतलब नियरली एवरेज, नॉट एग्जैक्टली एवरेज बट मीडियन इज 2.2. अगर वैल्यूएशन 0.9 टू 1.5 टाइम्स मिला, मतलब स्क्रीमिंग बाय है भाई. मैं तो मेरी लैंग्वेज में बोलता हूं, मेरे खुद के लिए एटलीस्ट घर बेच के डालो. तो ये कब होता है, जब 0.9 टू 1.5 टाइम्स प्लस रेशियो भी सस्ता है, रेशियो भी इस जोन में है. तो तब मैं ब्लाइंड, इट इज लाइक अ ब्लाइंड बाय फॉर मी स्मॉल कैप्स एंड एनी रैंडम स्टॉक्स. आई एम नॉट टॉकिंग इवन रिसर्च स्टॉक, रिसर्च आपके पास है तो और अच्छा करेंगे. और अंडरवैल्यूड नेम, अंडरवैल्यूड जोन, ठीक देखिए, हर बार डीप वैल्यू नहीं मिलेगा, हर बार कोविड वाला सिचुएशन नहीं मिलेगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं मिलेगा. डीप वैल्यू तो तब मिलेगा जब ऐसी कोई बड़ी आपदा आई है. बट अंडरवैल्यूड जोन छोटे छोटे मोटे टेम्पररी प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं. एंड व्हाट इज दैट अंडरवैल्यूड जोन, 1.5 टू 2.5x, और अभी चल रहा है 3.8x. आज यहां से गिर भी गया तो फिर भी मुझे नहीं लगता स्मॉल कैप सस्ता होगा. तो रेशो तो सस्ता आएगा लोगों को. लोग सिर्फ अगर कोई रेशो चार्ट पढ़ रहा है तो वो बोलेगा भाई रेशो रेशो चार्ट पे तो बाय है, स्मॉल कैप मुझे लोडअप करना चाहिए, बट उसके साथ वैल्यूएशन नहीं देखा तो वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है. क्योंकि रेशो बहुत लंबे समय तक लो रह सकता है. प्रॉब्लम वो है. अगर आपका वैल्यूएशन सस्ता है तो आप नीचे भी जाएंगे ना, लंबे समय तक रहेंगे भी तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपका कंफर्टेबल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे स्मॉल कैप में. सो इवन दो 6 महीने में अगर इक्विटी का टाइम आए, मुझे नहीं लगता स्मॉल कैप का टाइम मतलब 3 महीने में शायद इक्विटी का टाइम आ सकता है. बट स्मॉल कैप का टाइम थोड़ा लंबा मुझे लग रहा है कि लग सकता है. मे बी 6 महीने लग सकता है, 9 महीने लग सकता है. तो स्मॉल कैप से थोड़ा एसेट एलोकेशन इज अगेंस्ट, सो यू हैव टू बी वेल अवेयर ऑफ दैट. Now let us look at we are in a commodity bull run since March 2024 led by gold. Now then silver, and now it can enter into base metals, especially copper. So and I have discussed that in commodity bull run session. If you have not gone through it, it is available on YouTube. Now what is I'm focusing is copper miners in US. सो कॉपर माइनर्स ने कॉपर को 12 साल के ब्रेकआउट दिया है, और इसको मैं बोलता हूँ कुंभकर्ण पैटर्न. तो ये 12 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो हल्ला मचाएगा कॉपर माइनर्स. यू हैव टू कीप ट्रैक ऑन दैट एंड डिटेल वीडियो इज कमिंग ऑन दैट, यू कैन गो थ्रू दैट. और जब अब हमने गोल्ड फाइंड किया था तब हमने सिल्वर गोल्ड माइनर्स के बारे में भी बताया था. गोल्ड माइनर इज अप 120% इन पास्ट 16 मंथ्स. कौन सा एसेट आप बोलिए 16 महीने में, 18 महीने में 120% रिटर्न दिया है. सिल्वर माइनर इज अप 155% व्हेन वी डिस्कस फर्स्ट टाइम इन मार्च 2024. कौन सा एसेट क्लास है आप बोलिए जो 155% रिटर्न दिया, स्मॉल कैप ने भी नहीं दिया. एंड आई बिलीव देर इज अ बुल रन गोइंग ऑन इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. Spot it and ride it, and with FTVT approach you can spot it and ride it. So now the time has come for copper and copper miners. I think the detailed video is on the way. Stay tuned. So stay tuned. Commodity bull run session. Copper is the new oil, and especially the discussion on copper miners. Also with the discussion on how to invest in US stocks using a global investing platform. We have tied up with a global investing platform. उसके साथ you can invest through that, and that video is detailed coming on YouTube. If you are a part of Conviction Club,
स्कूल पे वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगा विथ ये लिंक आई ऑलरेडी शेयर्ड अबाउट ओपनिंग द ग्लोबल अकाउंट। तो वो आपको यूजफुल हो सकता है। सो स्टे ट्यून फॉर द कमोडिटी बुल रन सेशन, कॉपर इज द न्यू ऑयल, इट इज कमिंग ऑन यूट्यूब सून। So with this, I say that I have completed my session. Thank you for attending the session. Don't forget to follow us on our social media handles for the dose of knowledge, wisdom, and ideas. I'm available on Facebook, Twitter, YouTube, and all these things. I regularly take टेक्नो वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्कशॉप। कुछ समय से मैंने लिया नहीं है। नेक्स्ट मंथ से मैं वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दूंगा। एंड इफ यू आर if you have any questions, I'm open for the questions. I'll put down the recording first, then we can talk openly about the questions. I'll take the questions. I'll take 5 questions, then I'll end this session. So please raise your hand. Let me just put down the recording first.